Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. Before we start, I would say falling in life is inevitable and staying down is optional. तो चलिए फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Our first important headline is SA puts an end to two-finger test on rape survivors. It is available on page number 1 और ये related है paper 2 Polity and Governance से. In this article, we have to know about the Supreme Court's recent observations on the two-finger test. तो दोस्तों, recently, Supreme Court stated that anyone conducting two-finger test on sexual assault survivors will be held guilty of misconduct, right? Our next important headline is Kerala Governor Khan sets the ball rolling as deadline issued to VCs and by November 4. It is available on page number 8. और ये रिलेटेड है पेपर 2 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इट्स ओरिजिन, पावर्स एंड कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू इट. तो दोस्तों, गवर्नर को हमारी वेबसाइट पे कई बार कवर किया जा चुका है. लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन EWS कोटा आउटकम्स. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 10 और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. In this article, we have to know about the reservation system in India. What is the original intent of the reservation policy in newly independent India? Why instrument of reservation has expanded over the decade? Issues linked to it and way ahead. दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और इसको हमारी वेबसाइट पे भी कवर किया गया है. अगर हम दोस्तों ओवरव्यू देखें तो ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया वाज टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, those stigmatized and discriminated against on account of their birth into specific caste and tribal groups, right? Our next important headline is a pathway to citizenship for Indian origin Tamils. It is available on page number 10 और ये related है paper 2 polity and governance से. In this article, we have to know about the status of citizenship of Indian origin Tamils, issues faced by them, judgments related to them, and what steps need to be taken in this context. तो दोस्तों, यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम ओवरव्यू देखें, nearly 30,000 Indian origin Tamils has been classified as stateless persons based on technicalities. Therefore, in this article, it has been highlighted that government need to consider extending citizenship benefits to them in accordance with the Indian bilateral obligations and international humanitarian principles and international conventions, right? Our next important headline is the amendments to the IT rules 2021. It is available on page number 12 और ये related है paper 2 government policies and interventions से. In this article, we have to know about IT rules 2021 and what was the need to amend the IT rules 2021. तो दोस्तों, recently, Ministry of Electronics and IT notified amendments to the IT Technology Rules 2021. It primarily aimed at placing obligations on social media intermediaries to ensure an open, safe and trusted internet, right? Our next important headline is the ambiguity of reservations for the poor, unconstitutional or not. It is available on page number 13 और ये related है paper 2 Polity and Governance से. In this article, we have to know about 103rd Amendment Act, arguments favoring EWS quota, argument against it, Supreme Court's observations and what lies ahead. तो दोस्तों, इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक? Our next important headline is Supreme Court tells Center not to file new sedition cases, government re-examining provisions. It is available on page number 14 और ये related है paper 2 government policies and interventions से. In this article, we have to know about sedition law, argument in support of the law, argument against it and way ahead. तो दोस्तों, सेडिशन को भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. अभी न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि रिसेंटली Supreme Court told the government not to register any fresh FIRs under section 124A of the Indian Penal Code, which criminalizes sedition, right? And Supreme Court also granted additional time to Center to take appropriate steps with regard to reviewing of the sedition law, right? Our next important headline is Decentralise Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme for better implementation, says government study. It is available on page number 14 और ये रिलेटेड है पेपर 2 वेलफेयर स्कीम सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम
एंड फाइंडिंग्स ऑफ रीसेंट स्टडी। राइट दोस्तों, इस स्कीम को हमारी वेबसाइट पे कई बार कवर किया जा चुका है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अ स्टडी कमीशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज आर्ग्यूड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अलाउइंग more flexibility at the ground level. Right, our next important headline is scientists welcome clearance to GM mustard for farming. It is available on page number 16. ये related है paper 3 Biotechnology section से. In this article we have to know about GM crops in India, pros and cons, लीगल पोजीशन ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो दोस्तों, जीएम क्रॉप्स को हमारी वेबसाइट पे कई बार कवर किया जा चुका है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अभी न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज गेव अप्रूवल टू द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड फॉर कल्टीवेशन। राइट, और नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज RBI's digital rupee pilot for wholesale starts today. It is available on page number 18 और ये related है paper 3 economy section से। In this article, we have to know about the features of recently released concept note on central bank digital currency for India. तो दोस्तों, according to it, Reserve Bank of India will roll out the digital rupee for the wholesale segment on November 1st, which means today, as a part of its first pilot test program to review and improve the currency's functionality. Right? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.